को जिनस पई निश्चित भाव रे एंडोमेट्रियोसिस हो एमती किछ अछि कि माने इट इज अ होल बॉडी डिजीज, इट इज नो मोर ए पेल्विक डिजीज। माने हमें एंडोमेट्रियोसिस को ब्रेन रे, आखि रे, हार्ट रो कवर रे, लंग्स, प्लूरा रे, इंटेस्टाइन रे, किडनी पाइप रे, एवरीवेयर देखु। डाइट रो केते बड़ो रोल अछि इन मैनेजिंग एंडोमेट्रियोसिस? व्हाट यू ईट, व्हाट इज योर डाइट, सेही टाइप रे को टाइप रो बैक्टीरिया व्हिच आर हेल्दी and which are unhealthy in your gut. So your gut is directly related now to endometriosis बोली कहा जाउछि। को टाइप रो सिम्पटम्स एब्सोल्युटली इग्नोर करबा कथा नुहे। If a patient is having pain which is intolerable, severe category, and that pain typically starts prior to menses रा ठीक पूर्वरु, and it reaches its peak during menses. फैमिली रे डिस्कस होतबो कि ए पेन किलर टा नै गला ठीक बेटर लागिबो। Take this painkiller with the water. It should help with the pain. So this is the problem with endometriosis patient, and unfortunately many gynecologists also do not understand the disease. By the time patient go to specialist पाक आसंती, more often than not she is already in stage 4 of endometriosis. सेक्सुअल इंटरकोर्स बेलू कि लेट्स से प्रेगनेंसी प्लान करूछंती ए सब जिंस से माने केबे भी फ्यूचर रे कंटिन्यू करि परिबे और दे एब्सोल्युटली कैन नॉट। A good surgery can change their life in one day. बहुत थरा लोक मानकर धारणा थाए दैट जदि से कंसीव करनेबे पिला जन्म कर देबे किंबा यूट्रस रिमूव कर देबे तो एंडोमेट्रियोसिस इज गॉन फॉरएवर। Endometriosis is basically extra uterine, uterus रा बाहर आमे यूट्रस को रिमूव कर दे। को टाइप रो मिसकंसेप्शन लागी लोक माने से ऑपरेशन टा को अवॉइड कर दियंती। फर्स्ट हला मोस्ट कॉमन दैट इज अनफॉर्चुनेट दैट इन फैक्ट दे आर रिकमेंडेड बाय गायनेकोलॉजिस्ट फॉर दैट पर्पस आल्सो कि तोरे चॉकलेट सिस्ट अछि तू शीघ्र छुआ करी पका आ तोर एंडोमेट्रियोसिस कंट्रोल हे जिवो। पेशेंट इज 16 इयर्स ओल्ड, स्कूल रू कॉलेज जाउची, जस्ट सिस्ट अछि से कोठी बाहाव कोन छुआ कर। पेशेंट रो फैलोपियन ट्यूब ओवरी सब डैमेज्ड सर से तो छुईले पेन रे, शी इज रीडिंग इन पेन, क्राइंग इन पेन, इंटिमेट हे ही पारुनु तो छुआ को कर। नमस्कार, मु शिवानी त्रिपाठी एंड वेलकम टू हेल्थ पॉडकास्ट। आपण माने आज जो हेल्थ इश्यू विषय रे आज आम कथा हबा ता विषय रे डेफिनेटली जानिथिबे, ता पई इंट्रोडक्शन बिल्कुल भी दरकार नाही। घरे घरे देखिथिबे जे एंडोमेट्रियोसिस गोटे वाइडली डिस्कस्ड टॉपिक हे जाउची एंड लूजली डिस्कस्ड आल्सो। ए जिनसर फायदा उठेवा लगी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स रे बहुत मिस इनफॉरमेशन एंड बहुत सारा ट्रिक्स टिप्स आसुची जो गुड़ाक मेडिकली जमा भी वैलिडेटेड कि वेरीफाइड नुहे। तो से सबू बैड आइडियाज, बैड इनफॉरमेशन, बैड टिप्स को एलिमिनेट करवा लगी आम सांगे अच्छा पायनियर ऑफ एंडोमेट्रियोसिस ट्रीटमेंट डॉक्टर GSS महापात्र फ्रॉम अंकुरा हॉस्पिटल्स। हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार सर, मोर फर्स्ट क्वेश्चन रहिबा आपनको पई दैट अनेक थर बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा बिकॉज डे टू डे अफेयर्स रे एटा इंटरफियर करे जे लेडीज मानकर वुमेन मानकर बहुत थर एक्सपीरियंस हुए ऑफ पेन ड्यूरिंग पीरियड्स, हेवी फ्लो किंबा न थाई कि भी बहुत थर पीरियड्स पेन हुए, तो सेटा नॉर्मल पेन ना सेटा एंडोमेट्रियोसिस? जदि बहुत सिंपल टर्म्स रा को पुट करिवा, जदि पेशेंट को पेन किलर दरकार पड़ुमे, suppose she is managing very well with just hot water bag fermentation हो कि exercises कि any sort of yoga आसन और जो तरीके से पेन मैनेज हो जाउची, then that is fine. Or else the next level जदि जन को दरकार पड़ा ओवर द काउंटर जमती कहते पेन किलर्स मिलुची, से पेन किलर्स रे से जदि दिने 2 दिन गोटे 2टा पर डे खाई जदि मैनेज कर दउचंती and then she is doing fine, then this means it is okay again. But if somebody is requiring painkiller dinu 3टा 4टा yet patient bed ru uthi parunanti, then this means it needs attention and setbale silent roile hobani, you have to consult a doctor and especially an endometriosis expert probably, because never any pain which is normal is okay, any pain which is abnormal needs attention. सर, एंडोमेट्रियोसिस कौन एंड काहे की हुए एंड को जिनस पई निश्चित भाव रे एंडोमेट्रियोसिस हुए एमती किछ अछि कि? जदि हमें सिंपल टर्म्स रे अगेन पुट करिबा एंडोमेट्रियोसिस को, इट इज ए डिजीज और a disorder which was earlier considered to be only confined to the pelvis, माने महिला का तळी पेट पार्ट रे कन्फाइंड बुझा जाता, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, गर्भाशय, ओवरीज को, फैलोपियन ट्यूब्स को हेगले एंडोमेट्रियोसिस। नाउ इट इज कंसिडर्ड टू बी एक्स्ट्रा पेल्विक, माने इट इज अ होल बॉडी डिजीज, इट इज नो मोर ए पेल्विक डिजीज। माने हमें एंडोमेट्रियोसिस को ब्रेन रे, आखि रे, हार्ट रो कवर रे,
lungs प्लूरा रे intestine रे kidney pipe रे everywhere देखुछु. So it is a whole body disorder. आगरू कहउतला जे नाइ fallopian tube रु द्वारा ब्लड पळे आसे गर्भाशयर जो एंडो गर्भाशयर भीतर लाइन डा कौन एंडोमेट्रियम. नाउ समथिंग विच इज वेरी सिमिलर टू द एंडोमेट्रियम लाइक टिश्यू फैलोपियन ट्यूब द्वारा पेट भीतर को आसिकी ताकू कहते रेट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन थियरी आसिकी एब्डोमेन डिपोजिट होता. नाउ दैट कैन नॉट इफ दैट इज द थियरी ताले ब्रेन जाई केमती पहुंचला. If that is the theory, then lungs रे heart रे केमती पहुंचला. So this means it is there is something much more beyond it. So आजिकली कुहाउ जदि काहे की कुहाउची तो आजिकली gut microbiome theory आसीगला. So what you eat, what is your diet, सेही टाइप रे को टाइप रो bacteria which are healthy and which are unhealthy in your gut. So your gut is directly related now to endometriosis बोली कुहा जाउची. Because gut microbiome जो bacteria are called estrobolome, those are linked very strongly to your estrogen levels in your body. Once estrogen levels are affected, then endometriosis lesions start hobo. So endometriosis ro fuel is basically it comes from your menses, the hormone called estrogen, and the lesions are very notorious because endometriosis lesions nije tankar hormone tiyari kari paribe. Right. So endometriosis ku ame number one it is related to your gut. Number two, immune mediated. Our immune system को affect करी. And number three, it causes lot of inflammation. Body रे ढेर सारा scarring, fibrosis कराए. Lot of chemical mediators जो टेक inflammation करंती सेटा को release कराए because of which endometriosis हुए. तो जदि काहे की कोहाला and most importantly genetically, it is determined in the mother's womb that baby को सेही झियोटा को आगे जाइके endometriosis हबो कि नाही. Suppose mother को अच्छी ताले ता झियो को बा भौणी को अच्छी ताले सेही patient को 3 to 5 times higher chance of having endometriosis थाए. So this is how and why endometriosis occur. Jadi latest theory, the gut microbiome theory, the inflammation, the immune system related agar theory jo kaau valid nuho. Now coming to the second part, kon symptoms? It is a disease of D's. D माने severe dyspareunia. ଯେତେବେଳେ पेशेंट इंटीमेट हेबाकू चाहिए देर इज डीप डिस्पेरेंट माने पेशेंट को इंटीमेट हेला एते पेन डीप ऑर्गन्स रे हबो दैट विल बी एक्सक्रूशिएटिंग पेन. डिसेजिया माने खाइला बेल को हजम हेला को डाइजेशन देर इज सिवियर पेन है ना. देर इज डिसमेनोरिया सिवियर पेन ड्यूरिंग मेंसेस. सपोज हमें कैटेगराइज करिया माइल्ड मॉडरेट सिवियर तो सिवियरेस्ट कैटेगरी. and then it is called the dreaded endobelly माने पेशेंट रो पेट सबुले एते फुलिकी रहिबो जे पेशेंट को सबुले मो पेट भितरे कोन 10 किलो रो ट्यूमर अछि. and it is also characterized by infertility. Up to 50% of patients with endometriosis have suffer from ए जो infertility बा आम भाषा रे बंध्या दोषर फल. So a big disease which affects around 1 out of every 9 women in the whole world. 170 million women in the whole world suffer from endometriosis, and in India at least 50 million women endometriosis ru suffer karanti. So this is the magnitude of this disease. एबे आमे कथा हबा सर सिम्पटम्स विषय रे को टाइप रो सिम्पटम्स एब्सोल्युटली इग्नोर करबा कथा नुहे. एंड आपण जेमती स्टेज 4 विषय रे कहले व्हाट आर द प्रीवियस स्टेजेस लुकिंग लाइक. If a patient is having pain which is intolerable, जदि आमे ता कैटेगराइज करिया माइल्ड मॉडरेट सिवियर सिवियर कैटेगरी. ऑफिस जाई पारनती, स्कूल जाई पारनती, परीक्षा दे पारनती, and that pain typically starts prior to menses रा ठीक पूर्वरु, and it reaches its peak during menses, then immediately endometriosis is going to be the first differential diagnosis. ता सहित जदि पेशेंट को खाना हजम कला को डिसेजिया अच्छी, मेंसेस टाइम रे स्टूल पास कला को यूरिन पास कला को पेन होची बा यूरिन रे ब्लड आसवा स्टार्ट हे गलानी. दिस मीन्स एंडोमेट्रोसिस ब्लैडर भीतर को जाई कि नोड्यूल करि सारलानी. खाद्य नली करिक जता पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन होची, पेशेंट को एलोंग विथ ऑल द सिम्पटम्स शक्त पायखाना होची, झाड़ा हो नहीं. ता सहित पेशेंट को जदि इंटीमेट हेबारे सिवियर पेन होची, नॉट सुपरफिशियल पेन, जेतोले इंटीमेट होचंती डीप सीटेड पेन, then that is another sign of deep endometriosis. And finally जदि पेन हर का सब स्पेक्ट्रम रे अच्छी and patient is having infertility, conceive करिया को difficulty होची, then तो पूरा ही 100% it goes in favor of endometriosis. Yes,
जेहेतु आम एटा शूट कर इन द मंथ ऑफ एप्रिल आई वुड लाइक टू टेल दैट मार्च वाज एंडोमेट्रियोसिस अवेयरनेस मंथ. एप्रिल इज एडिनोमायोसिस अवेयरनेस मंथ. दैट इज द पुअर कजिन ऑफ एंडोमेट्रियोसिस जोटा कि सेम सिम्पटम्स कैरी करिबो बट यूट्रस रो बाहरे वी आर टर्मिंग इट एंडोमेट्रियोसिस. यूट्रस रो भितरे हेले वी आर कॉलिंग इट एडिनोमायोसिस इन कॉमन टर्म्स. जदि गर्भाशय रो भितर लाइन यूट्रस रो मसल वॉल्स को इन्वेड करिगला तो दैट इज एडिनोमायोसिस एंड बाहर आसीगला ताले वी आर कॉलिंग इट एंडोमेट्रियोसिस. तो दे ऑफन कोएग्जिस्ट इन 40% ऑफ एंडोमेट्रियोसिस यू विल आल्सो हैव एडिनोमायोसिस. सो पेशेंट्स माने एटा भी आज अवेयर हे जानतो हम पॉडकास्ट रे जे एंडोमेट्रियोसिस सहित देयर इज समथिंग आल्सो कॉल्ड एडिनोमायोसिस व्हिच इज वेरी सिमिलर इन सिम्पटम्स बट द एमआरआई और द अल्ट्रासाउंड will tell you what it is and often they coexist also sangare ek sangare rahati. I'm taking my notes sir. एबे we will move on to ए पार्टा जेतबेले आपण हाइलाइट करथिले कि बॉडी रो विभिन्न ऑर्गन को सेटा अफेक्ट करे एंडोमेट्रियोसिस. सो ले पर्सन टर्म्स रे एगुडी को केमिति व्हाट डू दे लुक लाइक केमिति दिसे से गुडा को ब्रेन जेमति कहिले फॉर एग्जांपल. Exactly. You won't believe माने पेशेंट्स माने जेतबेले बहुत थोर हमपा को आछंती तांकर ओवरिन सिस्ट हेची डायग्नोसिस हेची. ओवरिन सिस्ट हेची भाबी कि से ओवरी भी काढी दियाची एट द एज ऑफ 20 ओपन सर्जरी की एंडोमेट्रियोसिस जोगु से ओवरी काढी देइचंती बट दे हैव नॉट फोकस्ड ऑन अदर थिंग्स. फॉर एग्जांपल मु सब बेले कहे द सिस्ट आपण जो अल्ट्रासाउंड के एमआरआई देखुचंती इट इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग. तार बहुत अदर थिंग्स थिबो विच ए हाई रेजोल्यूशन अल्ट्रासाउंड ए वेरी ट्रेन्ड पर्सन जे कि अल्ट्रासाउंड ए सब जिंस धरि पारिबो तांको द्वारा हेबा कथा और एल्स एन एमआरआई. एंड एमआरआई रो भी इट शुड नॉट बी ए रूटीन एमआरआई पेल्विस. आमे सब गोटे एमआरआई एंडोमेट्रियोसिस प्रोटोकॉल अनुଯାयी करू बाय इंजेक्टिंग ए कॉन्ट्रास्ट जेल इनटू द वेजाइना एंड रेक्टम. तेला में वेजाइना रे आ रेक्टम खाद्य नली रो भितरे कोन सब लीजन्स अछि हम डिटेक्ट करि पारे. सी इफ यू फेल टू प्लान यू प्लान टू फेल. जे आपनकर ट्रीटमेंट करूचंती सपोज दैट पर्सन इज नॉट जज्ड और नॉट डन हिज और हर होमवर्क वेल से आपन गाइडेंस तो भूली देबे. So the evaluation has to be well. So that ये जो कहूली जे ओवरी रिमूव हो जाइछि what has happened ना गोटे पेशेंट आसथिले फॉर एग्जांपल तांकर पूरा पेट चिरी दियाछि फ्रॉम टॉप टू बॉटम ओवरी काट देइछंती थिंकिंग इट टू बी कैंसर एंड ता किडनी पाइप इन्वॉल्व हो जाइछि बाय एंडोमेट्रियोसिस. नाउ व्हेन हठात से गोटे जाइछंती रूटीन अल्ट्रासाउंड जना पड़छि जे किडनी पाइप को कंप्रेस कर दे सालानी एंडोमेट्रियोसिस. तो दैट इज कॉल्ड द यूरेटर. जतले किडनी पाइप को एंडोमेट्रियोसिस कंस्ट्रिक्ट करि देला the backflow re kidney swell karigalani and she is on the verge of losing her kidney and this has happened to me many times. Our surgeries are available on YouTube जो थ्रे कि हमें देखैछु जे पेशेंट रो किडनी पुनी हमको सेव करिया पड़छि. सो एंडोमेट्रियोसिस कैन इन्वॉल्व द किडनी पाइप को ब्लॉक कर दे पारे. एंडोमेट्रियोसिस जाइकरी खाद्य नली को बंद कर दे पारे. आ खाद्य नली रो कंस्ट्रिक्शन हेगला मीन्स पेशेंट रो मोशन प्रॉब्लम हे जिवो एंड व्हेनेवर यू हैव इंटेस्टाइन इन्वॉल्वमेंट हमको दरकार पड़ले से खाद्य नली काटिकरी जोड़िया. तो दीज आर ऑल बिग सर्जरीज. सो इफ अर्ली डायग्नोस द मेन पॉइंट इज if you do an early diagnosis we can prevent these late complications because patient तो बेचारा जानी पारिबे नहीं जो मोर इंटेस्टाइन केते परसेंट इन्वॉल्व होला कि मो किडनी पाइप केते इन्वॉल्व होला. बट इफ द पेशेंट इज कंसल्टिंग ए प्रॉपर पर्सन हु इज ए स्पेशलिस्ट और एन एक्सपर्ट से तांको रेगुलर फॉलो अप रे गाइडेंस रे डिटेक्ट कर दे विल नॉट अलाउ दैट पेशेंट टू गो टू those complications at least. तो आमे जेतले प्रॉपर सर्जरी करू जहा करू वी ऑलवेज आस्क द पेशेंट कि हम सहित प्रति 6 मास को थरे वर्ष को थरे यू हैव टू कम फॉर इवैल्यूएशन. आमे गोटे अल्ट्रासाउंड करबा यू शुड लेट अस नो हाउ गुड यू आर हाउ बैड यू आर तांकर डाइट शेड्यूल कोन हबो तांकर एक्सरसाइज शेड्यूल कोन हबो तर ता परे भी जदी पेन मैनेजमेंट दरकार कौन करवा. तो एवरीथिंग इंटीग्रल जदि ठीक से रहिला तेले जे दूर दूर पार्ट जो कॉम्प्लिकेशंस इट कैन बी प्रिवेंटेड बिकॉज पेशेंट्स इवन कम हम कंट्री रे बेसी माने कॉमन नुह इन अफ्रीकन कंट्रीज आर का वी हैव सीन लिटर्स ऑफ ब्लड लंग्स रो चारियाडे जमा हो जाई थाए बिकॉज ऑफ रिपीटेड मेंस्ट्रुएशन रिपीटेड एंडोमेट्रियोसिस लीजन द्वारा ब्लड ता भितरे. तो व्हेनेवर इट इज ड्रेन्ड आउट 700-800 ml ब्लड बोही आसे माने हेमोथैरेक्स थाए तो कैटेमेनियल न्यूमोथैरेक्स को हुए बिकॉज दैट इज दे ऑल अकर इन एंडोमेट्रियोसिस. तो इफ यू रियली वांट कि डिटेल्ड एते लेट कॉम्प्लिकेशंस न हो देन अर्ली डायग्नोसिस इज द की.
एंड से टाइप रो समय सर एटा कोन रूटीनली करेबा को पड़े ए जो ड्रेनेज भलिया जेमति आपण कहले No, routinely nahi. Suppose somebody is complaining of severe chest pain, either on the right or on the left, and that pain is typically coming during menses. Okay. So that raises a very high suspicion कि endometriosis lesions liver उपरे diaphragm रे lungs रे pleura रे अच्छी and इवन हार्ट रो जो कवर अछि पेरिकार्डियम सेठी भी एंडोमेट्रियोसिस लीजन्स अछि आ आमे एक्सरसाइज करबाटा भी हुए मोर कहवा मीनिंग हला सो इफ दोस सिम्पटम्स अकर एनी सिम्पटम एनी पेन इन द बॉडी जोटा कि कोइंसाइड करछि विथ योर मेंसेस पीक टाइम रे पीक मेंसेस टाइम रे नउछि देन दैट हैज टू बी एड्रेस्ड प्रॉपर इवैल्यूएशन हेबा दरकार एंड दैट इज अगेन गुडे सर्जन सहित गोटे सीटीवीएस सर्जन सहित वाट सरका नहीं करी दैट नीड्स मल्टीडिसिप्लिनरी टीम कि तार आमे तार इवैल्यूएशन तार रिमूवल बिकॉज द ओनली ट्रीटमेंट देयर इज एक्सिशन ताको मेडिसिन रे से मेडिकल मैनेजमेंट रे से जिनसटा ठीक ही पारिबो नाही लुकिंग एट द पेन मैनेजमेंट जमती आपण कहले सिवियर एक्सक्रूशिएटिंग पेन माने सही परिबनी गोटे लोक से भलिया पेन हुए तो आजिकली तो पेन सप्रेसेंट किंबा पेन किलर्स तो बहुत प्रकार भी आसी गलानी तेबे जतबेले कि आउट ऑफ प्रैक्टिस बाय हैबिट किंबा फैमिली रे डिस्कस होतबो कि पेन किलरटा नहीं गला ठीक बेटर लागिबो ए जिनसटा ऑफ द काउंटर करिबाटा केते मात्रा रे डेंजरस हे पारे फॉरगेट द फैमिली तो कुहा हुए जाए तू मिछ कहूँ तो कॉलेज जावाक चाहूनु बा परीक्षा देवाक चाहूनु तो भौणी तो यहाँ होता से कौन बेसी मेडिसिन तो नहीं केबे तू बहाना करचु तो दैट इज वेयर द प्रॉब्लम स्टार्ट्स because that is why endometriosis diagnosis 7 to 12 years नहीं जाए for diagnosis. Forget the family doctors मान को पाको भी जदी गले जदी family physicians पाको गले से माने मेप्टल्स पाजे तो मुंडरे सब ही दोषटा अछि जस्ट तू बेकार किछ नहीं बुझा पेन किलर खा जा तो this is the problem with endometriosis patients whom do they अच्छा next जैसे पुणी देखें तो एते पेन होची तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम अछि तू गैस्ट्रो डॉक्टर पाको पड़ा नाउ शी अंडरगोज ए कोलोनोस्कोपी sigmoidoscopy endoscopy सब सरी गला खाइला परे भी अगेन टुडे आई हैड ए पेशेंट who has undergone endoscopy colonoscopy सब and her intestine को पूरा lumen टाको narrow कर दी endometriosis and she only had a chocolate cyst से ultrasound रे खाली cyst देखुतले and she used to regularly complain कि मोर stool रो थियरीटा the form of my stool is changing तो she was consulting people undergone sigmoidoscopy colonoscopy yet the diagnosis was not there आमे जेतल गोटे MRI करेलु pelvis रो as per endometriosis protocol today we figured out that more than 40% of our bowel lumen intestine रो जो lumen टा is already narrowed by endometriosis and now we have to do a segmental resection माने से intestine रो से part काटिकरी हमको जोड़ीबाक पड़ियो so these are the consequences of medical gaslighting माने हमें डॉक्टर्स माने पाको गले भी and unfortunately many gynecologists also do not understand the disease and they prefer to give medicines or hormonal preparations and in that process the patient loses very valuable time by the time patient go to specialist पाको आसंती more often than not she is already in stage 4 of endometriosis बेले बेले सर पेन फ्री एंडोमेट्रियोसिस भी थाई की yes there is something called silent endometriosis up to 30 to 40% of patients रे हे भी पारे that they will have endometriosis and yet they do not तांकर diagnosis है because they didn't feel the pain no stomach cramps absolutely not सेथि लगी मैं जो एबे टिके डेरी पूर्वरु कहउतली जे I was talking of immune system ए जो हमर neuromodulation तो when nerves are related many times this explains कि patients with very small cysts might have severe pain आ जो मानकर बहुत बड़ा बड़ा cyst अछि से मानको किछि पेन न होई पारे यार कारण कोन yes so whenever see it is a disease of inflammation and fibrosis तो जदी गोटे बड़ा cyst अछि but it is freely mobile in the abdomen से कोनसी nerve को टच करू नाही nerve कोनसी entrapment है नहीं pain receptors stimulate है नाती तो brain is not sensing pain तो pain हैला नहीं but you have a very small cyst or you do not have cyst किंतु पेटर जो तली पेटर जो चादर अच्छी कॉल्ड पेरिटोनियम सेठी आमे गन शॉट बर्न्स को गन पाउडर बर्न्स को एलन मास्टर क्रेटर्स को एटा हम टेक्निकल टर्म्स जोतरे कि छोट छोट माचिस काटी जदि आमे स्पॉट जळे देली जेमती स्पॉट हबो सेमती स्पॉट्स थिबो which cannot be diagnosed by an ultrasound or MRI but patient कहउथि मते excruciating pain why because से जो nerve fibers ता तळे जाउची they are irritated and patient को severe pain होची in fact
it can involve the big nerves of the pelvis, sciatic nerve, pudendal nerve को involve करी patient को एते पेन हम विच इज रेडिएटिंग डाउन टू आवर लेग्स जदि पेशेंट कहते मते पेन एते होची सर जे अंटा तळीपेट एंड इट इज रेडिएटिंग टू माय लेग्स मो गोड़ तळ थाइस को जाउची दिस मीन्स देयर इज सम एंट्रैपमेंट ऑफ सम नर्व so silent endometriosis also exists and you can also have endometriosis with no cyst nothing yet patient ko endometriosis achi so both the extremes are seen in endometriosis. So you are saying the same thing for weight gain and weight loss also कि जो मानकर bloating नथिबो still endometriosis थाई पारे. Weight is in no way related to endometriosis. Okay. Bloating is not due to the fat abdomen. Bloating is because intestine is attached जेतल जो आम सपोज गर्भाशय एठी यूट्रस रहिला इंटेस्टाइन लाइज वेरी फ्रीली एमती है कि तळ को पास कर जाया कथा एंडोमेट्रोसिस इज ए डिजीज व्हिच रिलीजेस लॉट ऑफ स्टिकी मटेरियल तो द इंटेस्टाइन इज पुल्ड टुवर्ड्स द यूट्रस fallopian tube ovaries everything moves together and they are stuck and they form one conglomerated mass तो intestine जेतले एठी हुक हे गला मोशन क्लियरली पास हो नहीं जेतले मोशन जाउची it finds difficult to pass through that is why that pain हुए that bloated abdomen हुए एवं painful bloating हुए the patient is and because of this only patient रो constipation हुए and because of these things only ताकू टायर्डनेस बा मूड स्विंग्स भी हुए जदि आमे देखिबा जे गायनेकोलॉजिकल कंसर्न्स रे बेले बेले मिसडायग्नोसिस किंबा एंडोमेट्रियोसिस रो डिटेक्शन रे बहुत समय लागि जाय तारो कारण कोन पय एटा कोन अन्य टॉप प्रॉब्लम्स ठू टिके तळे आसे और इट इज जस्ट बैड जजमेंट प्रॉब्लम इज दैट अनफॉर्चुनेटली जस्ट मुझे कहूतली जे इवन फिजिशियंस आर नॉट ट्रेन्ड टू डायग्नोस एंडोमेट्रियोसिस आउ एंडोमेट्रोसिस लगे आजकल तो पूरा स्पेशलिस्ट ही बाहर एंड वेन एवर समबडी इज डीलिंग विथ दीज डिजीजेस जो कि जानती नहीं तो आम जहाँ कहते दैट मेडिकल गैस लाइटिंग कंट्रीब्यूट्स एंड द पेशेंट कीप्स रनिंग फ्रॉम वन क्लिनिक टू द अदर क्लिनिक आउ जहाँ कहते 7 to 12 years बहुत थोड़ा लग जाए टू फॉर डायग्नोसिस ऑफ द पेशेंट बाय द टाइम पेशेंट गेट्स डायग्नोस इट इज ऑलरेडी stage 4 so for whenever a patient has such symptoms से इटा वाइज जैसे जाइए कौन सी स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करंतु लकीली यूज ऑफ चैट जीपीटी भी हेलानी एंड मिस यूज ऑफ चैट जीपीटी भी होची बट आई वुड रेकमेंड कि चैट जीपीटी यूज करी पेशेंट सीज से देखिए जे हाँ मोर ये सिम्पटम्स अच्छी तो आई शुड बी एंड दैट इज हैपनिंग विद द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया जहाँ भी हो कि पीपल आर नाउ मच मोर अवेयर देयर वाज अ टाइम व्हेन आई स्टार्टेड स्पीकिंग ऑन एंडोमेट्रियोसिस मे बी a few years back there were hardly people who understood C stage now patients come to me and मैंने बसवे सर आई हैव एंडोमेट्रियोसिस कि आई हैव चॉकलेट सिस्ट एंड देन द डिस्कशन स्टार्ट्स फ्रॉम देयर तो सेटा बहुत खुशी लगे बिकॉज आई ऑलवेज वांटेड दैट पीपल शुड बी अवेयर एंड नाउ दैट टाइम हैज कम डोंट एक्सपेक्ट कि ओनली आम जो अर्बन प्लेसेस रू माने इवन दिस सो कॉल्ड रूरल एरियाज रू they come to me and tell sir more chocolate they are coming and telling sir more endometriosis achi more chocolate cyst achi sir sunichi recurrence hue sir it affects infertility so they have done their homework by the time they have come to me so it is very heartening that patients they are enlightened and they want to understand everything about it so it is a very heartening thing सर एबे कमिंग टू अ साइकोसोशियल एस्पेक्ट जोटा कि लोकंकर डे टू डे अफेयर्स रे डेफिनेटली गोटे बहुत बड़ बाधा पकई पारे दैट इज एंडोमेट्रियोसिस थिले जेमती आपण कहले सेक्सुअल इंटरकोर्स बेलुकू किबा लेट्स से प्रेगनेंसी प्लान करूचंती ए सब जिंस से माने केबे भी फ्यूचर रे कंटिन्यू करि परिबे और दे एब्सोल्युटली कैन नॉट केबे ओ करि परिबेनी एटा प्लान No, माने post surgery you mean to say कि जब माने with endometriosis जदि ट्रीटमेंट नौ चंती can they still continue to have it can a good surgery can change their life in one day one day there are tons of people जो माने आसंती आमे तांकर गोटे इंटरनल एग्जामिनेशन करिया चाहू से इंटरनल एग्जामिनेशन करिया से माने दियंती ने एते पेन तो इंजेक्शन देकरी आमे तांको इंटरनल एग्जामिनेशन करू बिकॉज तांकर जो प्राइवेट पार्ट वेजाइना रे एडे एडे एंडोमेट्रियोसिस नोड्यूल्स था पूरा ब्लूइश एंग्री लुकिंग नोड्यूल्स जोटा कि एवरी मेंसेस रे पूरा फ्लेयर अप कर जाउची तार पेन तो व्हेन यू डू ए गुड सर्जरी मुझे एमती बुझौतली खाली सिस्टा को न देखी जोठी होची ढूंढ के निकालना पड़ता है सब जिनस यू फिगर आउट एंड देन यू रिमूव इट पेशेंट बिकम्स पेन फ्री द वेरी नेक्स्ट डे
माने मोर 90% टू बी अधिक पेशेंट्स विल रिकवर विल बी फैंटाबुलस by the next visit जो मैंने आसंती very few patients आउ टिके पेन लगी एक्स्ट्रा सपोर्ट by exercises बा से ए थेरापी जगह दरकार पड़ती but 95% patient will be super. Sir, coming to the topic of infertility, endometriosis थिले कौन infertility is like a common situation, common effect ना बहुत डिले कर देले कि क्योर पाई न गले सेतेबेले इनफर्टिलिटी With हुए mild endometriosis सेमती stage 1 and 2 ovaries और fallopian tube रे अल्प अल्प छोट छोट cyst भी देखा जाउची पेशेंट्स कपल कंसीव कर जाती एते असुविधा हुए नहीं बट विथ एडवांस्ड एंडोमेट्रियोसिस सक्सेसफुली छुआ जन्म हबारे भी सेतेबेल को किछि ना किछि प्रॉब्लम हुए नहीं विथ वेरी माइल्ड एंडोमेट्रियोसिस दैट इज वेरी कॉमन सी सपोज आई एम द यूट्रस दीटा फैलोपियन ट्यूब दीटा ओवरीज एते दूर दूर रहबा कथा ठीक अछि नाउ इन एंडोमेट्रियोसिस व्हाट हैपेंस इज the anatomy is lost and everything is pulled together uterus ra pachako ta pachare so when the fallopian tubes are distorted pelvis ro tole pelvis ra anatomy is distorted so is migration of sperm and egg each other towards each other in the fallopian tube seta huwe nahi fallopian tube suppose emiti etiki patla rahba katha seta jodi etiki mota he gala because of blood deposition in endometriosis called hematosalpinx तो इट लूजेज इट्स फंक्शन तो फैलोपियन ट्यूब ओपन थी किंतु फंक्शन लूज करिगला ओवरीज रे ओवरी नॉर्मल एतिकी साइज रे थाए ओवरीज रे भितरे एग्स ओसाइट्स थांती तो व्हेन ए ओवरी इज डिस्टेंडेड बाय ओल्ड कलेक्टेड ब्लड चॉकलेट सिस्ट हे गला तो ऑटोमेटिकली ओवरी रे जो कॉर्टेक्स अछि कैप्सूल अछि सेटा नष्ट हे गला तो एग डिमिनिश्ड हे जानती एग क्वालिटी भी खराब हे जाए ओके तो ए डिस्टॉर्टेड फैलोपियन ट्यूब गोटे अनहेल्दी फैलोपियन ट्यूब गोटे मोटा फैलोपियन ट्यूब विच हैज लॉस्ट इट्स नॉट कंसिस्टेंसी पुअर एग क्वालिटी पुअर ओसाइट क्वालिटी एंड फाइनली यूट्रस रे भितरे जोठी बेबी रहइबो तार जोठी एंडोमेट्रियम रे बेबी रहइबो तार रिसेप्टिविटी खराब हे जाय एंडोमेट्रियल रिसेप्टिव माने इट इज नॉट एबल टू एक्सेप्ट द एम्ब्रायो सो आवर बॉडी रे सिंस आई वाज टेलिंग किछि देरी आगरु जे इट इज ए होल बॉडी डिजीज तो बॉडी रे गोटे रिजेक्शन स्टार्ट है टुवर्ड्स एंडोमेट्रियोसिस जदि कॉमन टर्म्स रे पचारिबा आपण को घर चारियाडे जदि कादुओ पंक सब थिवो कैन यू स्टे No. it will be difficult to stay so for a baby when everywhere there is dirt and mud around it is very difficult for the embryo to grow so the egg the ovaries the fallopian tube the uterus everything has to be reset सब एड्रेस करिया पड़िबो सब एनाटॉमी को रिस्टोर रिमूव ऑल द डर्ट से कादुओ पंक सब क्लियर कले देन द एनवायरनमेंट इज लेस हॉस्टाइल देन द बेबी कैन ग्रो अदरवाइज इन अप टू 50% ऑफ एंडोमेट्रियोसिस पेशेंट्स बंध्यादोषर प्रॉब्लम देखिया को मिले सर जदि मोर एंडोमेट्रियोसिस अच्छी एंड मोर पिला कंसीव करिवार अच्छी फॉर एग्जांपल तो मोर कौन आइडियली करवा उचित अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर ट्रीटमेंट जोटा मोर चली किछि एमती स्पेशल इंस्ट्रक्शंस अच्छी की जदि अल्ट्रासाउंड सपोज यू आर ट्राइंग हार्ड प्रेगनेंसी रोहुनी बट अल्ट्रासाउंड देखा मिलला जे यू हैव स्मॉल मे बी 1 or 2 सेंटीमीटर सिस्ट एंड फैलोपियन ट्यूब मोरलेस फाइन अच्छी गोटे एचएसजी परीक्षा कराला फैलोपियन ट्यूब भल अच्छी हस्बैंड का स्पर्म काउंट भल अच्छी देन यू शुड ट्राई फॉर 6 to 8 months नेचुरली बिकॉज 8 months भितर प्रेगनेंसी आसी जबार बहुत चांस अच्छी बट वंस सिस्ट साइज बिकम्स 4-5 सेंटीमीटर कि अल्ट्रासाउंड के एमआरआई रे दौचन जे फैलोपियन ट्यूब भितर भी ब्लड जमा हेलानी हेमाटोसाल्पिंग्स then it is the right time that you should undergo a laparoscopic or a robotic surgery. So that is called a fertility enhancing surgery and restoration of normal pelvic anatomy. माने fertility केमती आसीबो कोन कोन दरकार cyst बाहर कर दिया हला and fallopian tubes जदि महिला ब्लड ताको ड्रेन कर दिया हला सब जिनस ताको जागा को वापस सेट कर व्हाट आई वाज टेलिंग सपोज जदि पछको आसीगला वापस वी आर ट्राइंग टू रिस्टोर स्ट्रक्चर को आसीगला यस then in those cases the chances of conception again वापस back आसीगला आम डेटा देखौची जे स्टेज 1 and 2 रे जदि आमे गोटे एंडोमेट्रियोसिस सर्जरी करछे तो chances of conceiving is as high as 70 to 80%, stage 3 रे 60 to 70% and stage 4 रे 55 to 60%. so endometriosis रो mere presence does not mean कि आमे सर्जरी करबा उचित but
even with minimal endometriosis, if you're not conceiving in 8 months, 6 to 8 months, then would a laparoscopy करिदेले better late than never वाले अवस्था रे you can conceive naturally. And if you have florid endometriosis, advanced endometriosis, then it is wise to go, because जदि हमें advanced endometriosis अच्छी हमें patient को IVF लई पठेई देले ताले से बहुत थर एमिति भी हुए जे ओवरीज जेतले एग ड्र करा चेष्टा कराउछि फॉर IVF pus formation हो जाए and finally ovaries भी remove करे पड़ी पारे. And so it is wise that that should be addressed before going for an IVF also. गोटे सर फैक्ट चेक विषय कथा हवा दैट इज बहुत थर लोक मानकर धारणा थाए दैट जदि से कनसीव करनेबे पिला जन्म करदेबे किंबा यूट्रस रिमूव करदेबे तो एंडोमेट्रियोसिस इज गॉन फॉर एवर. तो एतरे केते सत्यता अछि? हाउ ट्रू इज इट? It is as true as Modi is the president of United States of America. तो कहीं की ना endometriosis is basically extra uterine. यूट्रस रा बाहर अब आम यूट्रस को रिमूव कर देले आम भावुचे जे टास्क ए कम्प्लीट. यू टेल मी हाउ राइट कैन इट बी? नंबर 1. नंबर 2, एंडोमेट्रियोसिस रे कहबे जे ओवरीज भी काढ़ी देबा आउ सरीगला काम. नो, एंडोमेट्रियोसिस टिश्यू तांको निज हार्मोन निजे तैयारी करि पारंती. सो इफ द लीजन्स आर प्रेजेंट एंड यू हैव लेफ्ट से माने तांको निज हार्मोन्स तैयारी करिवे निजे सेना तैयारी हे गला again the manifestation will come back. So if at all you are planning uterus and ovary removal for a patient of endometriosis, it should also include a radical clearance of all endometriotic tissue in the pelvis. माने ता छड़ा भी कोठी कोठी कौन अच्छी, plan it, remove everything. So why that becomes important? Because बहुत थोड़ा endometriosis is very close to the intestine, kidney pipe, etc. So somebody requires real skill and that will only come with an expert. Right. मु सबुबले कहिछि it is many a times मु कहिछि it is more challenging than a cancer surgery, because cancer surgery रे your anatomy is clear, सबु जिंस तांको जागा रे अछंती, but endometriosis रे you have to tackle all those with nobody in their own situation. के कोठी अछि किछि जणा नै, तो it becomes more challenging. So खाली यूट्रस ओवरी काढ़िले हबो नहीं, the other endometriotic tissue काढ़िले ही patient pain free हेबे. Otherwise 6 months पर the patient will come back and patient will tell कि सर मोर पेन तो बिल्कुल भी जाऊने, कि even after the surgery or next visit रे भी कहे मोर पेन बिल्कुल भी जाऊने. And it has happened to me that many a times यूट्रस रिमूव हो जाइछि, ओवरी रिमूव हो जाइछि अलग अलग जगह रे, and patient बारंबार तांको पाउ जाइछंती and doctor कहछन जे मु तो सब काढी देली तोरा क्लियर, तोर तो माइंड तो पागलटा. नो, the lesions have been left behind and जेतोला में पुणी सेकंड सिटिंग रे जाऊ we remove everything, patient is pain free. Why will she be psychic? So that is how it is. So it should be dealt only by people who specialize in endometriosis. आउ गोटे ले पर्सन क्वेश्चन इज दैट एटा ओल्ड पीपल मान को भितर, ओल्ड विमेन मान को भितर भी देखा जाए कि Yes, आगुरु कहउतला जे पोस्ट मेनोपॉजल हे जिवा टिके सही जा एंड एटा कमी जिवो. It's not like that. I am tackling post-menopausal endometriosis also in big numbers. जो मान करो suppose 48-49 years हे गलानी, आउ endometriosis that will not go. As I was telling, आमर body रो hormone level रे तांकर सिना नहीं, but से nodules तो तांकर hormone तैयारी करी चलचंती ना, तो we are getting. But yes, the volume of जो patients post-menopausal अच्छे तांकर endometriosis is much less to females of reproductive age group. But we still find आउ से माने suffer करंती and they need a good surgery. डाएट रो केते बड़ो रोल अछि इन मैनेजिंग एंडोमेट्रियोसिस, किंबा जदि थरे एंडोमेट्रियोसिस डायग्नोसिस हेई सारिछि सेतबेल को डाएट रो कोन रोल अछि एंड केमतिया थिबा कथा? In fact, it is now the epicenter of the whole concept of endometriosis very recently. जदि देखा जे आगर जो थियरीज को आमे बुझौतिले, एबे एंडोमेट्रियोसिस को आमे गट ताकू सबुटु इंपोर्टेंट करे मझिरे ही. इट इज द सन अराउंड व्हिच द प्लैनेट ऑफ एंडोमेट्रियोसिस रिवॉल्व्स. कहीं ना आम जो गट बैक्टीरिया गट फ्लोरा अच्छी, that is in माने very intricately related to endometriosis. Suppose you have very harmful bacteria which really flare up endometriosis, so you will suffer from endometriosis. But if you have a very nice diet, gut friendly diet, so or anti-inflammatory diet, then you are asking the endometriosis to stop. So आजिकली fecal microbiome transplant that is being considered, माने they are trying to replace the bacteria of the gut
healthy bacteria so that endometriosis रा incidence टा न हो बोले. तो even that is in कौन कहते formation process experimental stage रे, but they are trying to. तो what I'm trying to tell is जेतिकी दूर आमे एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट रखिबा, वेजिटेबल्स साग सब्जी खाइबा, दैट इज रियली गुड फॉर यू. एनी टाइम विच इन्वॉल्व्स बटर, रेड मीट, अल्कोहल, कैफीन, प्रोसेस्ड शुगर्स आमे इनवाइट करछे एंडोमेट्रियोसिस टू फ्लेयर अप. Maybe they do not cause it, they will flare up endometriosis. But the more you are more towards an anti-inflammatory diet, lots of fruits, vegetables in your diet, then automatically it will help you. More जेतବେଳେ ଆମେ medical management বা surgical management, post surgical treatment करू, I always emphasize, especially young females जो माने they have a long way to go, तांको diet को मु बहुत focus करी बुझाए जो what to eat, what not to eat if you are really wanting that endometriosis should be kept at bay. See, if endometriosis को flare up करो तो automatically pain भी कमी जाउची ना. तो it will not directly decrease the pain, but if you are not allowing endometriosis to flare up, then automatically this means you are helping the patient to have less pain. And एठी कहबी हल्दी, turmeric, it is a fantastic anti-inflammatory. There is no endometriosis patient of mine jaku me turmeric advice करे नहीं. It is a fantastic anti-inflammatory thing to reduce endometriosis of pain. So if anybody listening, please include that in your diet daily. बाटी के चमचे यदि पी ले, so that will help you immensely if you are having severe menstrual cramps. So you cannot ignore the role of gut and diet in endometriosis. What about the role of exercise? Exercise रो केते हाथ अछि endometriosis को manage करिबारे? मो सबु बेले कहे जे मेंसेस रो पूर्वरु जदि if you are increasing the amount of your workouts, automatically you will have less cramps even if you don't have endometriosis. तो if aerobics, gym जहाँ भी करा होची, see pelvic congestion भी जदि होची, जन को severe cramps होची and you are doing intense workouts, तो pelvis रा जो circulation that starts going ना, तो automatically the pain comes down. And post surgery especially pelvic जो floor therapy rehabilitation exercises, breathing exercises and ये जो pelvic floor therapy exercises will help you immensely to reduce pain. See हमारे टा pelvis रे the pelvic muscles support the uterus, the urinary bladder, intestine, खाद्य नली समस्त को के सपोर्ट करछ? pelvic floor. तो whenever there is intense endometriosis, ए जो pelvic floor ना से पूरा गोटे contraction को पळाए, it goes to a guarding state. ठीक अछि? तो जेतळे बहुत थोड़ा में structurally lesions को काटिकरी बाहर धरि आनबे anatomically lesions नाहंती, अल्ट्रासाउंड रे, एमआरआई रे, लैप्रोस्कोपी रे, रोबोटिक्स रे नाही. But the muscle continues to be in that state. तार से ब्रेन तार नर्व इम्पल्सेस से सेमिति अछि जे मु गार्डिंग रे रहि गेली. तो for those patients जदि एक्सरसाइज करा गला, proper exercises, trained exercises by a trained physiotherapist, then it will have remarkable impact on pain reduction in that patient. किछि एम्ति एक्सरसाइज अछि जोटा बिल्कुल करिबा कथा नुय कि अवॉइड करिबा कथा? ना. Any pelvic exercises which increases the circulation of your lower pelvis, which relaxes the muscle of your pelvis, all those exercises should be encouraged. Sir, coming to treatment options, treatment modalities, केवल औषध रे मैनेज हे जाए, मेडिसिन रे मैनेज हे जाए कि ऑपरेशन इज मैंडेटरी ना सेटा ऑप्शनल थाए? Operation is never mandatory. Okay. But the decision is taken जदि हमें layman time से बुझेबा. Suppose you have a cyst which is less than 3 centimeter. Suppose you have a patient who is young, unmarried, in her teens maybe, and nowadays teenage endometriosis is a बहुत बड़ा problem. And suppose the patient has very less symptoms, एते किछि हाई-फाई symptoms नाही, पेन मे बी कोइंसिडेंटली अल्ट्रासाउंड देखा गला एंडोमेट्रियोसिस कि पेन होची बट नॉट ऑफ द सीवियरेस्ट कैटेगरी जे पेशेंट स्कूल फुल जाई पाउना. तो इन दोज सिचुएशन देयर आर परफेक्ट सिचुएशंस फॉर मेडिकल मैनेजमेंट टू स्टार्ट. बट इफ यू हैव एडवांस्ड एंडोमेट्रियोसिस, लोक ऑलरेडी मेडिकल मैनेजमेंट नहीं सारचंती, मु देखुची लोकों को 8 वर्ष धरी मेडिकल मैनेजमेंट, फॉर हेवन सेक दोज थिंग्स शुड बी डिस्करेज्ड. तो आई ऑलवेज टेल मेडिसिन्स रे इट इज 3 थिंग्स. 1, इट इज टेम्पोररी, इट्स नॉट परमानेंट. 2, it is only suppression, it is not reversal. 3, it is only for the symptoms, not for the disease. Disease तारा चली थी वो, किंतु symptoms आपनकर कम देखा जाउची. On off हो. ये तो
it is wise that don't be under medication for long term. जदि आम देखुचे गोटे पेशेंट को मेडिकल मैनेजमेंट बहुत पीरियड ऑफ टाइम दिया गला येट सिम्पटम्स आर रादर इंक्रीजिंग बा सेम रही और अल्ट्रासाउंड एमआरआई द साइज ऑफ द लीजन्स आर इंक्रीजिंग और पेशेंट इनफर्टाइल अच्छा बंध्या दोष अच्छी पेशेंट सर्जरी माने पेशेंट प्रेगनेंसी आसुना तो दीज आर ऑल आइडियल इंडिकेशंस जोठी की सर्जरी हेबा उचित एंड एस्पेशली जोठी की परिसरा नली घर भितर बड़े ब्लैडर नोड्यूल होगला एंडोमेट्रियोसिस कि खाद्य नली आम बावेल नोड्यूल देखिले दे आर तो श्योर शॉर्ट से तो मेडिकल मैनेजमेंट रो क्वेश्चन ही उठू नहीं दे आर श्योर शॉर्ट केसेस जोटी की ए गुड सर्जरी कैन फिनिश द थिंग इन वन डे जदि जार ऑपरेशन एंडोमेट्रियोसिस एडवाइस है सो एबे को टाइप रो मिसकनसेप्शन लगे कि भूल आइडियाज लगे लोक माने से ऑपरेशन टा को अवॉइड कर दियंती मोस्ट ऑफ द टाइम आपन को एक्सपीरियंस रे फर्स्ट है मोस्ट कॉमन दैट इज अनफॉर्चुनेट दैट इनफैक्ट दे आर रिकमेंडेड बाय गायनेकोलॉजिस्ट फॉर दैट पर्पस आल्सो कि तोर चॉकलेट सिस्ट अच्छी तू शीघ्र छुआ करी पका सर्जरी फर्जरी नहीं कि तू छुआ करी पका आउ तोर एंडोमेट्रियोसिस कंट्रोल हो जिवो नाउ लेट मी पुट 2 or 3 hypothetical situations. Patient is 16 years old, स्कूल रू कॉलेज जाउची जस्ट सिस्ट अच्छी से कोठी बाहाव कौन छुआ करियो. नंबर 2 सिचुएशन पेशेंट रो फैलोपियन ट्यूब ओवरी सब डैमेज्ड बड़ बड़ सिस्ट अच्छी फैलोपियन ट्यूब रे ब्लड अच्छी छुआ करी पका हाउ विल द बेबी कम राइट. नंबर 3 पेशेंट को इंटीमेट हेला को सीवियर पेन होची. आई हैड दिस कपल फ्रॉम राउरकेला जे कि पेशेंट को एते पेन होतला जे हस्बैंड इंजेक्शन देबा सीखी जाइतिले कहले सर अधा राति रे केते थर हॉस्पिटल नहीं की जीबी. सो आई यूज्ड टू गिव हर इंजेक्शन एंड दे वेंट व्हेन दे मेट द डॉक्टर टोल्ड की छुआ करी पका कहले सर से तो छुईले पेन रे शी इज रीडिंग इन पेन क्राइंग इन पेन इंटीमेट हे ही पारुनो तो छुआ कोटो करियो. So these are those situations which should not be encouraged any day, any time in the society. When somebody is struggling, please understand that they need to go to the doctor. Number 2, जेतोले सिस्टर का अछि सुने एटा रिकरेंस हबो एंड आउ थरे हबो सेतले कि ऑपरेशन न करियाटा भलो. Again that is a myth, that is a wrong. Why? Because it is true that endometriosis can recur, but in inexperienced hands the recurrence will be as high as 80 to 90%. But in expert hands the recurrence will only be 4 to 6%. Because lesions remove here. भल proper जदि clearance है तो 96% will be fine and 4% जो recurrence भी हुए that does not occur because of the incapability of the surgeon. The surgeon hasn't left anything. It is because endometriosis or tissue ही एमितिया in some person it will just flare up on its own, get its own nutrition, hormonal support and it will come up. So मुझे गैदर करछि गोटे जिंस लोक मान को टेबल रू कंप्लीटली साइड कर दवा कथा जे एंडोमेट्रियोसिस माने सर्जरी बाध्य. Never. It is always that को category रे को bracket रे what are your symptoms, what and another thing, it is not that one size fits all. एंडोमेट्रियोसिस रे पेशेंट को कौन दरकार, पेशेंट को फर्टिलिटी दरकार मु पेन लगी सर्जरी करबी, दैट इज अगेन रॉन्ग. सो व्हाट द पेशेंट वांट्स, पेशेंट रो रिक्वायरमेंट कौन, पेशेंट रो एज कौन, पेशेंट को फर्टिलिटी रो प्रॉब्लम अच्छी ना पेन रो प्रॉब्लम अच्छी, अर्ली स्टेजेस अच्छी ना एडवांस स्टेजेस अच्छी, मेडिकल मैनेजमेंट इज इक्वली इंपॉर्टेंट प्रोवाइडेड इट इज गिवन इन द राइट सिचुएशन. पेशेंट सेंट्रिक अप्रोचेस जोड़ा को तांका क्वालिटी ऑफ लाइफ सब जिंस सब गुरुत्व देखि पेशेंट रो कोन रिक्वायरमेंट अछि. सर एबे एंडोमेट्रियोसिस रो ट्रीटमेंट रे कोन एडवांसमेंट्स आसी सरलानी विथ टाइम. If we consider endometriosis and adenomyosis also, adenomyosis रे आगुरु हमें adenomyomectomy करथु. adenomyoma रो माने काढी दोतले से एरिया, but it always कौन हुए ना adenomyomectomy is a surgery which is unrewarding मु सब बेले कहे. Why? Because adenomyosis involves the normal uterine wall. और normal uterine wall तो हमें chop off करी परिबेनी तले patient रो uterus रहिबनी baby के. So I brought this technique to Odisha a few years back called microwave ablation. माने we melt common भाषा रे हमें ट्यूमर टा को मेल्ट कर दोचु at high energy and with that what happens is uterus उपरे कोनसी कट पड़िला नहीं, गोटे निडल गला very thin needle 1.9 mm needle गला and it produces heat and आमे अल्ट्रासाउंड गाइडेंस रे देखु थाउ एंड लैप्रोस्कोपी रे जे केते एरिया से मेल्ट कला and it automatically melts the adenomyosis.
And second advancement ମୁଁ କହିବି will be for endometriosis is that newer and newer concepts ଆସି ବସିଲାଣି ଏବେ ଯେମିତି ଗଟ୍ ମାଇକ୍ରୋବାୟୋମ୍ ଥିଓରି କହୁଥିଲି ମଲ୍ଟିଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ଟିମ୍ସ ଆସିଲେଣି ଆମେ ଆଗରୁ ଏକା ହିଁ ଯାହା କରୁଥିଲେ ଯାହା ବୁଝୁଥିଲେ କରିଦେଉଥିଲେ नो आई हैव ए GI सर्जन इन माय टीम मोथरे टीम रे यूरोलॉजिस्ट अछंती फिजियोथेरापिस्ट अछंती we will need psychologists बहुत सारा it is multidisciplinary naturotherapy acupressure so many things everyone has a role pain therapist we will need multiple people to address the patient's problem खाली आगुरु जेमती रोहुतला जे only a gynecologist it is no more it is pura specialized so many people are involved in the treatment of endometriosis this is another new thing third is the understanding of endometriosis per se re nuwa technology asilani for example ame with AI integrated concepts asigalani joti ki ame gote dye push kar daba into the patient's body au ultrasound karila alku joti endometriosis achi seta green dekha jibo to जो लोग डायग्नोसिस जानी भी नहीं गोटे रूटीन रेडियोलॉजिस्ट भी अल्ट्रासाउंड कल की गायनेकोलॉजिस्ट देख अरे एटा तो 80 इज इट समथिंग लाइक पेट सिटी हाँ लोगों को जस्ट बुझिया पाए यस डाइट ए पुश करा हला एंड ग्रीन से तो देयर इज एन ऐप देयर इज ए AI सॉफ्टवेयर कॉल्ड स्कैनवियो सेथिरे हलानी तो सेथिरे कोन होची ना डायग्नोसिस विल बिकम इजी आउ गोटे इंपोर्टेंट जिनस वी हैव ए टेस्ट कॉल्ड ज़िविग टेस्ट आगु कौन होता है लोक लैप्रोस्कोपी करके डायग्नोसिस करते एंडोमेट्रियोसिस दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग डायग्नोसिस करिया लगी यू हैव अल्ट्रासाउंड यू हैव MRI किछि नले हिस्ट्री पेशेंट रो कथा सुनी कि जदी कंप्लेंट सुनिले बे हम डायग्नोसिस करि परिबा नाउ ज़िविग टेस्ट हला पेशेंट रो जो छेप अछि सलाइवा रो वी कैन डिटेक्ट दैट पेशेंट रो एंडोमेट्रियोसिस अछि कि नाही वाओ Next, yes, but currently the sample is going to France and Asuji, so it is a bit costly. But I am sure with the times to come that will also become more and more cheaper and easily available. Out enu helani menstrual blood ru आजिकली diagnosis हेई परिबो जे patient को endometriosis अछि कि नाही. So that those tests are also that is again coming up. I think in a year or two that also will come established. And finally, last but not the least, we have a drug which is again in the experimental stage called Endo 205. What is Endo 205? Endo 205 is a non-hormonal drug, जोटा की like surgical strike, उरी बेले जाई करी targeted lesions को से attack करिवा. टार्गेटेड लिजन सो एबे आमे जेतले मेडिसिन्स खाउछे जो माने एंडोमेट्रियोसिस पेशेंट्स माने जानी थिबे जे आमे हार्मोनल थेरेपी जोगु होल बॉडी इज अफेक्टेड देयर आर मूड स्विंग्स ड्यू टू दी मेडिसिन्स देयर आर बोन पेन बोन मास इंडेक्स कमी जाउची सेतले आमे कैल्शियम विटामिन डी पेशेंट्स को दो तो ए जो जनरलाइज्ड सिस्टमिक साइड इफेक्ट्स होची बिकॉज दैट इज गोइंग टू बी ए नॉन हार्मोनल ड्रग थेरेपी तार ए साइड इफेक्ट्स बिल्कुल भी होबने तो इफ एंड आई एम श्योर इन द टाइम वेरी सून जदि से ड्रग आसीगला इट विल बी ए गेम चेंजर इन द ट्रीटमेंट ऑफ एंडोमेट्रियोसिस बिकॉज आम एक रे लिजन्स को कंट्रोल करदे दुई नंबर पेशेंट को साइड इफेक्ट्स भी देवानी सो आई एज एन एक्सपर्ट आई एम जस्ट प्रेइंग कि सब जिनस जल्दी से जल्दी मेटेरियलाइज हो जाओ एंड इंडिया बीइंग सच ए हाई वॉल्यूम सेंटर फॉर माने कंट्री फॉर एंडोमेट्रियोसिस पेशेंट्स I think the सब जाको boons हवा and finally though this is not new in a country like Australia they have a national action plan for endometriosis since 2018 आमे आज भी सोईचु British Parliament there is discussion by the health minister by the prime minister कि what are your steps for endometriosis patients they have a allocated budget now in Australia followed by France, Ireland, Denmark कि हमें budget allocate करिया for endometriosis patients. India रे तो इटा I don't know when will it come to reality but this is my prayer that one day even the government understands the sensitivity and becomes more sensitive towards the issue of endometriosis in to India. make it more accessible. See, mu seita hi sabale kaiji very nice that I am a firm believer we operate at very less prices than many parts of India. Why? Because I always believe that our treatment should be yes to all, no to none. This should be the motto. So to make it more affordable, the government has to step in, more action plan has to be generated, and then when you invest something for the patients, so automatically patient को से facility टा मिलियो.
सर लोक संख्या जो मानकर साइड इफेक्ट शुणला पर क्योर पाई आ लोक माने कंटिन्यू करंतनी सेटा बहुत अधिका आम कंट्री रे एटलिस्ट जे साइड इफेक्ट्स हे जो बोली आमे प्राइमरी ट्रीटमेंट भी करवानी नहीं, the problem is this is a very interesting topic because whenever I write a even today it has happened तो मु जदि गोटे रूटीन पेन किलर लिखिली लाइक तो पेशेंट पचारे सार यार कौन सी साइड इफेक्ट नहीं कि तो आई इमीडिएटली आस्ट कि आमे गुपचुप पलट जो आपण खाऊचंती पानीपुरी तो डिड यू आस्क कि गुपचुप रो साइड इफेक्ट अच्छी कि नहीं तो एंड द सेकंड पेशेंट हु हैड कम टू मी वाज बाय द टाइम से मते बायोप्सी देखिले से ऑलरेडी चैट जीपीटी से बायोप्सी टाको रिपोर्ट देखि सारथिले जे प्री कैंसरस थिला वाली तो यही जिनस जाक जदि आमे तो दीज आर रॉन्ग थिंग्स मिसयूज ऑफ नाउ चैट जीपीटी इफ यू गो टू गूगल देन पैरासिटामोल रे भी साइड इफेक्ट देखाई जे लिवर फेलियर एंड डेथ ओके सो गूगल विल ऑलवेज स्केयर यू Yes. जहाँ भी सिम्पटम्स को हबो कहबो जे यू आर प्रोबेबली हैविंग कैंसर यू आर गोइंग टू डाई काइंडली कंसल्ट ए डॉक्टर एज सून एज पॉसिबल डिप्लोमेटिक एंडिंग सहित so it is wise that as you said let before thinking about the positive side let us not go and see the negative part undergo the primary treatment and along with it see some side effects will come but then the doctor will manage those side effects for you and guide you कि से side effects केते minimally आपण experience करिवे एबे सर एंडोमेट्रियोसिस कंप्लीटली ट्रीटेबल की I will not tell treatable, I will not tell it is curable, but it is controllable. आमे control रे रखी पारिबा and for it to be kept under control मुझा बुझेली it begins right from the stage where the family understands कि मो झियो को कहीं कि एते पेन होची जोटा कि बाकी झियो को हो नथिला कि तार सांग मान को हो नहीं से कहीं कि स्कूल कॉलेज ऑफिस जाई पारु नहीं प्रोबेबली शी नीड्स टू कंसल्ट एन एक्सपर्ट जो जनरल फिजिशियन से मान को अटेंड करचंती दे शुड नॉट स्टॉप ओनली बाय कि पेन किलर दे देले बा तो मुंडो खराब अछि कहबा को उचित नहीं दे शुड सेंड इट टू द पर्सन प्रॉपर इवैल्यूएशन दरकार गोटे हाई रेजोल्यूशन अल्ट्रासाउंड की एमआरआई प्रॉपर ट्रीटमेंट दरकार आइदर मेडिकल और सर्जिकल बाय एन एक्सपर्ट and proper follow up darkar also post surgery or post treatment भी every 6 months mo always call it is a chronic disease it is not a viral illness ki flu hela thonda kasa chinko 3 दिन hela and it will disappear it is a disease which is going to stay it can come back so for that to be kept under control जेमिति आमे डायबिटीज ब्लड प्रेशर पेशेंट माने डॉक्टर ताको रेगुलरली एवरी 3 months 6 months रे जानती केबे डोज टी के बढ़िबो केबे डोज टी कमिबो एंड दे डू वेरी वेल फॉर 30-40 years at least तो आमे रिप्रोडक्टिव एज at least 40-41 years जदि कंट्रोल रे रहिले रेगुलर फॉलो अप रहिले एंड मल्टी डिसिप्लिनरी आमे नेले समस्त जो माने दे कैन मेक कंट्रीब्यूट टू मेक ए चेंज इन योर लाइफ to make a difference in your life समस्त जदि हेल्प नहीं आला all the patients will do wonderfully well सर आपण डिजीज रो पिक्चर टा बहुत सुंदर भाबरे एक्सप्लेन करिसंती एबे मोरो गोटे अगेन फैक्ट चेक रहिबो जे जणे जदि केवल लाइफस्टाइल मैनेज कला डाइट एक्सरसाइज एगुडी को सब कला सेइथरे एंडोमेट्रियोसिस टा रिवर्स हे जिवो की unfortunately on insta एबे बहुत सारा सोशल इन्फ्लुएंसर्स बहती गंगा में हाथ धोने के टाइप्स नो दे आर ऑल कमिंग इन एंड टेलिंग कि खाली नेचुरोथेरेपी करो यू फॉलो माय डाइट फॉर एंडोमेट्रियोसिस एंड यू विल नॉट हैव टू गो टू एनी डॉक्टर प्लीज फॉर हेवन सेक दैट शुड नॉट बी एनकरेज्ड सी दैट इज एन एडिटिव फॉर एग्जांपल पेशेंट रो मेडिसिन दरकार मेडिसिन दियाला पेशेंट रो सर्जरी दरकार सर्जरी कराला पेन थेरापिस्ट एवरीवन इज प्लेइंग देयर रोल फिजियोथेरेपी है एक्सरसाइज चलची डाइट चलची along with that you do some naturotherapy along with that you control your lifestyle changes करिले it is fine but only मोर lifestyle रे आउ केरला जाइकी थेरेपी करी पकेबी by XYZ these things should not be encouraged they are wonderful adjuncts additives but they are not the main or the central role तो तांको द्वारा प्ले ही पारिबा नहीं सर एबे आपनकर लास्ट मेसेज जो स्त्री लोक माने महिला माने अनेक थर साइलेंटली सफर करचंती एंडोमेट्रियोसिस तांको पई आपनकर मेसेज कोन रहिबो नेवर सफर इन साइलेंस सिंपल इट इज टाइम टू स्पीक इट इज टाइम टू येल इन फैक्ट जे आउ एई पेन मु सहिबी नहीं एई पेन सहिबा दायित्व मोर नुह आई एम नॉट बोर्न मु जन्म हेई नहीं पेन सहिबा को एंड आई हैव एवरी राइट to go to the doctor to consult an expert and I am very happy that my society is changing मेरा देश बदल रहा है and people are coming and as I was telling very early in the podcast that people are coming to us and telling that sir more endometriosis achi तो I feel very happy that
patient ete educated ete aware heleni, so don't suffer in silence. It is not invisible anymore. And it is not a pelvic disease, it is a whole body disease. So there is no point in suffering, no point in thinking of suicide. People have contemplated suicide. Don't suffer from mood swings. Don't let it affect your family, your marital life. You are right to get a baby. Sabu kichi deprived huantu nahi. Speak up and consult a specialist. especially when it's accessible and obviously available. Yes. Thank you, sir, for all the wonderful insights. तेबे आजी आपण एंडोमेट्रियोसिस विषय कौन न जानिले ऑलमोस्ट सब किछि एंडोमेट्रियोसिस कौन सेतरे कौन प्रॉब्लम्स हुए स्टेजेस रे कौन कौन असुविधा हुए आमर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स कौन कौन आसी सारी ताको आपण प्रिवेंट केमती करि परिबे किमा एंडोमेट्रियोसिस सहित भी केमिति क्यूरेटिव मेजर्स आपण नहीं पारिबे तार भी डिटेल्ड डिस्कशंस हेची एंड आपण को को जिनसर डर किमा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एबे एटलीस्ट ए पॉडकास्ट सेशन पर हवा कथा नुहे तेणुकरी डिले करंतुनी प्रॉपर्ली इनफॉर्म्ड रहंतु निजर लव्ड वन्स मानक संगे ए इनफॉर्मेशन गुडी को सब बेले शेयर करंतु एंड आमर पॉडकास्ट सहित सब बेले कनेक्टेड रहंतु टेक केयर।